Good morning to everyone. We will be doing this sum in front of your screen. You are required to prepare a balance sheet as on 31/3/2018 as per Schedule 3 of the Companies Act 2013 from the following information of Meher Limited. So you are required to prepare a balance sheet. They have asked us to again prepare this sum also. We'll have to prepare a balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act 2013 from the following information of Meher Limited. So what is given? Term loan secured. So this is secured loan. It is a long term, that is liability, that is non-current liability. Then we have trade payables. Trade payables means creditors and bills payable, current liability है. Other advances, it is current asset. Cash and bank balances, current asset. Staff advances, current asset. तो ये provision for taxation is a short-term provision. Securities premium is a reserve. Loose tool current asset में आएगा. General reserve, this will come under reserves and surplus. Capital work in progress, ये हम fixed asset में लिखते हैं. Tangible, intangible and capital work in progress. This is type of fixed asset जिसको हम fixed asset को property, plant and equipment बोलते हैं. Then investment, we have non-current, that is long-term investment, non-current investment. Profit for the year is surplus. Profit for the year हमारे लिए क्या है? Reserves and surplus का surplus है profit for the year. फिर trade receivables, current asset, debtors and bill receivable को बोलते हैं trade receivable. Then what else we have? Then we have miscellaneous expenses. Now miscellaneous expenses, this is fictitious asset. Miscellaneous expenses not written off. Miscellaneous expenses not written off. So let us see whether it is miscellaneous expenses. हम कहाँ दो जगह में दिखा सकते हैं. Miscellaneous expenses जो है हम दो जगह में दिखा सकते हैं. एक तो हम लोग दिखा सकते हैं अंडर से इवन इफ इट इज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अगर अदर एक्सपेंसेस है. मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब इफ इट इज अदर एक्सपेंसेस तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर में से माइनस करेंगे. इफ इट इज प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना हुआ है, उसमें से अदर एक्सपेंस माइनस नहीं किया, मिसलेनियस एक्सपेंस माइनस नहीं किया, तो वो वहां से माइनस कर लेंगे. दैट वे मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ. दिस मिसलेनियस एक्सपेंस, अगर ये दो अजम्पशन हो सकते हैं, या तो ये रिटर्न ऑफ वाला है या तो ये नॉट रिटर्न ऑफ वाला है. अगर ये रिटर्न ऑफ वाला है सो ये P&L अकाउंट में आएगा, चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अगर ये नॉट रिटर्न ऑफ है, इफ इट्स मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, तो ये दो जगह में से कोई एक जगह में लिख सकते हैं, या तो अदर नॉन करंट एसेट या तो अदर करंट एसेट. टू एनी ऑफ द वन प्लेस वी कैन राइट. लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, तो दिस वी विल टेक लोन from the other parties. We will take in the asset side, we will take loan लिया है अगर तो नहीं, loan from other parties, this is loan taken not loan given, so it will come in the liability side. देखो ये वाला जो ट्रायल बैलेंस है ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये ट्रायल बैलेंस भी नहीं है. यहाँ पे एवरीथिंग इज मिक्स्ड. They have not given separately assets, separately liabilities, everything is mixed. देख के हमें समझ में आना है कि ये क्या है. So loan from, loan taken from, so this is liability, हमें ये फिर return करना है. And then we have प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर में से लेस होता है.
बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउट एंड वी हैव टू प्रिपेयर ओनली बैलेंस शीट. हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है, सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करना है. एंड देन वी हैव स्टोर्स विच इन्वेंट्री में हम लेंगे, इन्वेंट्री का में हम लोग लेंगे so here provision for doubtful debts is done. Now stores will come under inventories. Fixed asset is given WDV, that is, what is it? It is fixed asset means property, plant and equipment. And then we have finished goods, which is 30 lakhs, which is closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods. Then what else we have? Then we have additional information. Additional information gives the information about share capital. Share capital consists of 1,20,000 equity shares of ₹100 each fully paid up, and we have 40,000 10% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up. So this is the information on share capital. Then हमें क्या करना है, फिक्स असेट को हम फिक्स असेट में से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है. फिक्स असेट में से what we will have to do, we will have to depreciate the depreciation given. So fixed asset में हमें depreciation करना है, what is given. So इसके बाद now we can start with the sum. The name of the company is Mehar Limited. And what we are preparing, we are preparing balance sheet as on 31/3/2018. Here it is given. Balance sheet date is given here that we have written. Now let us prepare the table. So particulars, notes to account, and rupees. Particulars, notes to account, and rupees. What is the first one? In the liability side, we start with equity and liabilities. लाइबिलिटी साइड कैसे स्टार्ट करते हैं ना, वैसे यू नो हम हमारा बैलेंस शीट जब वर्टिकल फॉर्म में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट करते हैं. सो द लाइबिलिटीज इज नोन एज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. एंड इक्विटी का मीनिंग है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड में आता है टू थिंग्स, वन इज शेयर कैपिटल एंड द अदर वन इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो इसके लिए दो नोट बनाना है हमें, फॉर दिस वन एंड फॉर दिस टू. लेट अस गो टू नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट. तो नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट वन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर शेयर कैपिटल. Share capital का information in the question only it is given. Let me remove the space first. So यहाँ पे share capital में what is they have not given anything that sorry they have given share capital consists of in the additional information.
So we can write down, we don't know what is the authorized, issued, we don't know anything. So authorized, issued and subscribed and called up. Nothing is given. So हमने ये पूरा assume कर लिया एक ही है. And how much they have given for the equity? They have given 1,20,000 equity shares of rupees 100 each, fully paid up. How much is it coming? 1,20,000 into 100. So it is coming to 1 crore 20 lakhs. Then we have 40,000, 10% redeemable preference shares of rupees 100 fully paid up. Again multiply 40,000 into 100, we get 40 lakhs. So how much is the total coming? दोनों को add करो, 1 crore 60 lakhs. So we got our first note, 1 crore 60 lakhs is the share capital. Now we come to the second note, that is reserves and surplus. Reserves पहले लिखेंगे and surplus उसके बाद we will write. So let us see reserves में what is given. What is given in the reserves? So we will check in the question. Reserves में I can see what all reserves are given. Security premium is given and general reserve. Here profit for the year is surplus. Reserves and surplus. Surplus means information about profit and loss account. So यहाँ पे दो ही reserves we can see, security premium and general reserve. So I will write here securities premium. How much is the amount? Securities premium, I can see it is 19 lakhs. Then we have general reserve. General reserve is 62 lakhs. I will write it here because बाद में total भी करना है. ये दोनों का total कितना आ रहा है? ये दोनों का total कितना आ रहा है? पहले वो that also we want. या तो फिर लास्ट में टोटल करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे नहीं किया तो 19 लाख प्लस 62 lakh is coming to 81 lakhs. Then what we have surplus. Surplus may we write about the profit and loss account. Profit and loss account का क्या दिया है? Opening balance नहीं दिया, last year का balance is not given, but profit for the year is given 32 lakhs. So what we will do? Profit and loss account comes in the surplus. So इसका opening balance not given. Opening balance nil, not given. Then profit for the year, that is given 32 lakhs. And इसमें से less करना है. What is given here? Miscellaneous expenses return of 2,32,000 plus miscellaneous expenses return
of 2,32,000 माइनस करके कितना आ रहा है, माइनस करके आ रहा है 29,68,000. सो ये दोनों का टोटल जितना आएगा दैट वी विल राइट इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस. दैट इज दोनों को ऐड करो, you will get 1,10,68,000. See whether we are getting this amount. 1,10,68,000. So we have got share capital also, and we have got reserves and surplus also. Now what we want? Now we want liabilities जो दो टाइप का है, नॉन करंट liabilities and current liabilities. Non-current liabilities and current liabilities. So here, is there anything given about non-current liability? Do we have any loan fund, long-term borrowing, anything given? Secured, सबसे पहले लाइन में it is given term loan secured. So, and anything else is there related to non-current liability? Is not there. Investment, loan from other parties, that we have not specified whether it is long term कि loan from other, at least it should be given कि किससे loan लिया है. That is not given. So we have only one non-current liability, that is long-term borrowings. Which is term loan secured. Secured है. Term loan secured. How much is the amount? 40 lakhs. No, only one is there, so no need to prepare the notes. Then current liability में हमारे पास क्या है? We have loan from other parties. If we assume it to be short term, तो ये short term borrowings है. That is, we can say loan from other parties. How much is the amount loan from other parties? It is 8 lakhs. Then we have trade payables. इसको A बोल देते हैं. 1 minute. Let us call it as A. Then we have B. That is trade payables. Trade payables कितना है? 45,80,000. ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है. Then what else we have? Do we have any provision? We have provision for taxation. बाकी everything we can see. So we have short-term provision. Short-term provision. अपने ब्रैकेट में provision for tax. Provision for tax, how much is the amount? 10,20,000. So with this, our liability is done. We are done with the liabilities. Now we can come to the asset. Now we can come to the asset. So इसको we will say Roman 2 assets. Asset में दो टाइप है.
What is the two type? Non-current assets, and the second one is current assets. अब non-current asset में we have property, plant and equipment, जो fixed asset पहले बोलते थे जिसको, and equipment. तो इसका टाइप्स है tangible, intangible, capital work. This I am writing because it is given in question. Capital work in progress and intangible assets under development. Intangible assets under development. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? डायरेक्टली दे हैव गिवन, सी हियर कौन सा फिक्स एसेट दिख रहा है? लैंड, बिल्डिंग, एनी गुडविल, इंटेंजिबल एसेट कुछ दिख रहा है? ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 8 lakhs. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस is the tangible assets under construction. Capital work in progress, tangible assets under construction 8 lakh. तो इसके अलावा do we have any other? Here we directly have fixed asset, फिर उसका depreciation भी है. Fixed asset is also there and its depreciation is also there. So let us go to the note. ये इसके लिए हमें एक नोट में जाना पड़ेगा. We have to prepare note tangible assets का. tangible assets में हमें क्या दिया है? एक्चुअली हमें डायरेक्टली ये दिया, फिक्स एसेट दिया, बट इसमें भी tangible, intangible दोनों रह सकता है ना. फिक्स एसेट इज tangible प्लस intangible. हमें फिक्स एसेट का दिया है. हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट दे हैव गिवन? 22 lakh. How much it is? 2 crore 26 lakh. I'm sorry, it is given 2 crore 26 lakh. Then depreciation is also given 2 crore 26 lakhs. Then depreciation is how much? 20 lakhs. So less depreciation. Depreciation. How much it is? 20 lakhs. In bracket माइनस करो कितना आ रहा है? It is coming to 2 crores 6 lakhs. 2 crores 6 lakh. So we will write here 2 crores 6 lakhs. $2 crore 6 lakhs we have got. But यहाँ पे फिक्स एसेट दिया है, वो tangible है, intangible है. That anything is not, fixed asset means it includes both tangible, intangible. So इसलिए मैं सिर्फ tangible लिख रही हूँ, because normally tangible asset should be there more than intangible. So इसके लिए मैंने सिर्फ tangible लिखा, because fixed asset means it includes both tangible, intangible. तो ये तो क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है. चाहे तो हम intangible भी नील बोल सकते, नहीं दिया तो भी चलेगा. इसके बाद व्हाट इज गिवन? इसके बाद करंट एसेट है, या उससे पहले यहाँ पे एक और चीज दैट इज बी, हम जिसको बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. Here in the first line they have given 9 lakhs non-current investment.
investment which is there for a longer period of time, 9 lakhs. What else we have? Now we will go to current asset. इसमें करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, बट इन्वेंट्रीज हमारे पास है, तो इन्वेंट्रीज के लिए भी यहाँ पे नोट बनाना पड़ेगा. वो इसलिए बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज गिवन. क्या क्या दिया है? स्टोर्स है, फिनिश गुड्स है, लूज टूल्स है, ऑल आर टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज. सो यहाँ पे इट इज गो टू द note number 4, inventories. हमारे पास क्या है? finished goods, stores and loose tools. So how much is the amount? 22 lakh, 16 lakh and 30 lakhs. That is right. 30 lakhs. This is 16 lakhs. This is 22 lakhs, na? सबका टोटल कितना हो जाएगा? 30 lakhs plus 16 lakh plus 2 lakh will give us 48 lakh. WDV means written down value. What is given about the fixed asset here is written down value of the previous year. This WDV, that is fixed asset, is the written down value, that is original cost minus depreciation is 2 crore 26 lakh and current year का depreciation is 20 lakhs. So हम कैसे निकालेंगे? 2 crore 26 lakhs is the value WDV of fixed asset minus current year depreciation is 20 lakhs. We get the net value, that is 2 crore 6 lakh. Written down value means original cost minus depreciation. So हमें कितना मिला? स्टॉक 48 lakhs. Inventory is 48 lakhs. Then we have trade receivable. इसमें भी there is doubtful debts. So again we'll have to go to the note because trade receivable के साथ doubtful debts भी है, provision for doubtful debts. तो 51 trade receivables less trade receivable less provision for doubtful debts. See, we have discussed the question also. So here we have seen in the question trade receivable is 49 lakh and provision for doubtful debts is 80,000. 49 lakh and 80,000. So we will go to the question here, to the note. 49 lakh and doubtful debt is, जो हमेशा डेटर में से हम माइनस करते हैं, 80,000. So how much we get? 48 lakh 20,000. So how much is our trade receivable? It is 48 lakh 20,000. Then what else we have? Let us see, cash and cash equivalent is there. Cash and bank balance 38 lakh 40,000. So we'll write
नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल के बाद हम लिखते हैं कैश एंड कैश equivalent. That is how much? 38,40,000. Then इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट. इसके बाद क्या आता है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट में आता है अदर करंट एसेट्स. इतना आता है. यहाँ पे इन्वेंट्री से पहले एक और है जिसको हम बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट. इफ इन्वेस्टमेंट इज ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, हम इधर दिखाते करंट इन्वेस्टमेंट. ये क्वेश्चन में करंट नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नहीं है तो वी कैन राइट इट नील. सो नाउ लेट अस सी. Let us see whether we have any short-term loans and advances. Short-term loans and advances में other advances है. Loans and advances में staff advances है. किसी और other someone को advance दिया है, staff को advance दिया है. Then other everything we have written somewhere or the other. बाकी सब mark किया. अब जो नहीं लिखा है वो other advances 14,88,000. Staff advances 2,20,000. So let us prepare one more note. It is note number 6. Short-term loans and advances. 6th one, short-term loans and advances. इधर हमारे पास है other advances. Other advances, and we have staff advances. How much is the amount? Other advances is 14,88,000 and staff advances is 2,20,000. दोनों का टोटल गिव्स अस 17,08,000. So we will write here 17,08,000 and other current asset कुछ भी नहीं है because इसके अलावा कुछ भी और कुछ भी दिया हुआ नहीं है. सब कुछ we have noted down, we have put it in the format in the notes. So finally what we will get will be our total. Now let us see at what amount the balance sheet is tallying. Liability side का total निकालो. 1,60 lakhs, 1,10 lakhs, 68,000, 40 lakhs, 8 lakhs, 45 lakh, 80,000, 10 lakh, 20,000. How much total we are getting? 3,74,68,000. And then in the asset side, take the total of the asset. It also should come 2,06 lakhs, 8 lakhs, 9 lakh, 48 lakh, 48 lakh 20,000, 38 lakh 40,000, 17 lakh 8,000. It also should come 3,74 lakhs 68,000. With this, we will say our balance sheet has tallied and this sum is done. Thank you very much, everyone. With this, I end today's lecture.